Hello everyone, good afternoon. Hello everyone, good afternoon. Welcome to our third lecture on functions. I hope you guys are doing great. This is going to be our last lecture in the algebra section. Today we're going to look at greatest integer function, least integer function, fractional part and all that. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer from Chennai with over 7 years of experience, and I have trained over 2.5 lakh students. This is the Telegram group that I would want you all to join. If you haven't joined it already, please go ahead and do that, because this will give you all the updates on everything that we have ever planned for your CAT prep. First, let's start with modulus function and then we'll move on to greatest integer and least integer function. So what does modulus function do? We all know that under modulus function, so if we have the definition of a function that says if y is modulus x, then the value inside, that is your value of x, could either be positive or could be negative. Yeah, if it is 0 or greater than 0, then x takes up its positive value. If x is less than 0, then it takes up the negative value. Yeah, so if I say f of x is, let's say, modulus -4, yeah, then x could be -4 and f of x turns out to be 4. Even if f of x is 4, let's say if f of x is modulus 4, so x is 4, modulus x is still 4 only. Yes, so this is one of those many one-to-many situations. Yes, sorry, many-to-one situations. One-to-many doesn't exist. Many-to-one situations where you have multiple values of input that gives you the same output. Yes, so a modulus function is not a bijective function. Okay, a modulus function is never a bijective function. Cool. Hello Rishi, good afternoon. Yeah, so how does the graph of a modulus function look like? Yes, so if I say y is modulus x, yes, when x is positive, 1, 2, 3 and so on, y will take up positive values 1, 2, 3, so on. Yes, so the line looks like this. But what happens when x takes up negative values, say -1, -2, -3? Although x takes up negative value, the value of your y still remains positive only. Yes, so this is how the graph of this function would look like. Y is equal to modulus x का ग्राफ ऐसा लगेगा आपको. ठीक है, अगर x, when x is 0, y is 0, when x is -1, y is 1, when x is 1, y is 1, so on. Yes, so if you notice, y का same value for two possible values of x. Yes, same values of y for two possible values of x. Same values of y for two possible values of x. Cool. Same way, if we have a graph, let's say for example, if we have a graph that says y is equal to modulus x -3, where x -3 in entirety is within modulus. In that case, when x is 0, y becomes -3. Yes, when x is 1, y becomes modulus of -3, that is still 3 only. Are you getting this? Modulus of 3. Yes, modulus of -3 giving us 3. When x is 1, y becomes modulus of -2, which is 2. When x is 2, y becomes modulus of -1, which is 1. When x is 3, y becomes modulus of 0, which is 0. When x is 4, it still gives you the same value. So I hope you are understanding. Yes, when x is 2, y is 1. When x is 4 also, y is still 1. So this is how the graph would look like for this. Yes, understood? So when x is 0,
y is 3. When x is 1, yes, when x is 1, y becomes 2. When x is 2, y becomes 1. When x is 3, y becomes 0. So the graph goes like this. So if you've noticed, the graph moves, the graph just moved 3 steps to the right. The graph moved 3 steps to the right because -3 is in modulus. In the same way, if we had minus x, what would we get? Minus modulus x. Whether your x is positive or negative, it doesn't matter, y will always be negative. So the graph of y equal to minus modulus x looks like this. Yes, when x is 0, y is 0, which is at the origin. But when x is 1, y is supposed to be 1, but it becomes -1. When x is -1, y is still -1. Same values of y, what different values of x. Yeah, this thing opens up at the bottom. It opens at the bottom. Why? Because whatever is y ka value, it becomes negative. Yes, we've seen this modulus x minus 3 already. Yes, what happens when modulus x is -3? Y is equal to modulus x minus 3. That basically means when x is 0, in the previous case we saw y was 3, but here y would become -3. When x is 1, y becomes -2. When x is 2, y becomes -1. When x is 3, y becomes 0. Clear? So the graph, this graph is actually a little incorrect. The graph should look like this. When x is 0, y is -3 here. Yes, when x is 1, y is -2. When x is 3, x is 2, y is -1, like this. So the graph is incorrect, but I hope you understand how the graph would look like. Okay? Same way, if the entire thing is in modulus, so it had moved 3 steps to the right. Because we are adding 2 to everything, it is moving 2 steps ahead. Yes, आपका जो पूरा x है, it becomes basically, it moves 3 steps to the right and 2 steps ahead. Yeah. Now let's quickly start answering some questions. What is the range of this function f of x is equal to 4 minus modulus x plus 1? What would be the range? What would be the range of this function? F of x is 4 minus modulus of x plus 1. Quickly try this. Anyone? So according to this function, y is equal to 4 minus modulus of x plus 1. We need to find out possible values of y. Ajay says A. So Ajay, what happens when I plug in x is equal to 10? What happens when x is 10? When x is 10, what would you get? You would get y, or f of x would be what? 4 minus modulus 11, which is 4 minus 11. That gives us -7. -7 is not a part of A, no? है ना? Rishi says D. Rishi says D. Rishi, what happens when x is -1? If I plug in x equal to -1, what will happen? Y becomes 4 minus 1 minus 1 ka modulus. Yes, -1 plus 1 ka modulus. So what do you get? Y is equal to 4 minus modulus of 0, which is 0 only. So y is equal to 4 is allowed, right, Rishi? Y equal to 4 is allowed. So D is also actually out.
Your actual answer should be option C. So to get this, to understand this, look at this. We are looking for maximum value of y. Yes, maximum value of y. Now how do we get maximum value? Because it is 4 minus something, we have to ensure that whatever is in this part should be minimum. Yes. And because this part is in modulus, we know the least possible value should be 0. Yes, so to get x plus 1 as 0, x will be what? Minus 1, giving us the maximum value of y as 4, which is accepted. So the right answer is option C. Clear? Option A and D are incorrect. Option C would be the right answer. Yes, hello Shrey, welcome. Now let's look at this question. They're asking what is the minimum value of this function? Minimum value of 2 times x minus 1 plus 3. Quickly answer this. Y is 2 times modulus x minus 1 plus 3, minimum. 2 modulus x minus 1 plus 3. So if this entire thing should be minimum, but 3 is a constant, that means you can't meddle with that, you can't change that. This 2 being multiplied is also a constant, you can't change with that. That basically means if you want the minimum value of this entire function, you should be focusing on the minimum value of this. Agreed? Yeah. So the minimum value of modulus x minus 1 will be what? Modulus x minus 1 ka minimum value, because whatever is in modulus, always remember, कुछ भी term अगर आपका modulus में है तो उसका minimum value will always be 0. Correct? We just saw कि modulus में जब होता है तो value greater than equal to 0 होता है, तो least value is 0. Yes. So अगर x minus 1 का value 0 होना है, मतलब x should be equal to 1. So when x is 1, what will happen? When x is 1, we would get y is equal to 2 times modulus 1 minus 1 plus 3, giving us what? Y is equal to 2 into 1 minus 1 is 0, modulus of 0 is 0, 3, y has to be 3. Minimum value of y is what? 3. Got it? So everybody who said C, very good, superb Shrey. Rishi, 0 is not the answer. No. This value can never be equal to 0. If you say it is 0, look at this. अगर आप बोल रहे हो कि वो 0 है, 2 into modulus x minus 1 plus 3 is 0, then you should get 2 into modulus x minus 1 as minus 3, or modulus x minus 1 as minus 3 by 2. मॉडुलस में कोई भी वैल्यू, कैसा भी वैल्यू डाल लो, नेगेटिव कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है? ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, if you are looking for a subscription for mock test, then you can take this 6-month subscription where you will get 2 full-length mock tests for CAT per week, 3 sectional tests for CAT per week, 2 full-length mock tests for other management entrance tests, and you will get video solutions for all of them. Yeah, don't forget to use the code Surana Live. Since this is an iconic subscription, you will be getting your regular unlimited classes plus one-on-one mentoring along with this. Yeah. Moving on, if we were to solve this, how would we solve this? Solve y equal to modulus 3x equal to 27. What could be the possible values of x? When they ask for solve, they basically want you to find the value of x. Can you find x in this quickly?
Hello Shreyashi, good afternoon. Rishi says A. So whenever you have modulus function or absolute value function, you should always remember that your input can have two possible cases. One, it being less than 0, the other it being greater than equal to 0. Yes, तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है? Since modulus 3x is 27, we will have two possible scenarios. One, modulus के अंदर का जो term है 3x, that could be 27, x being 9, or the second scenario where modulus का value जो है वो negative होता है, so x being -9. Both possibilities will work, so it's not A or B, it is option C. Okay, very good, superb Shrey, Ajay. Let's try the next question. Solve for x if modulus 5x plus 7 is 42. Quickly try this. Modulus 5x plus 7 is 42. So like I said, two possible cases here. Yes, case 1, 5x plus 7 will be a positive value giving 42. So 5x is going to be 42 minus 7, which is 35, or x being equal to 7. One of the cases is x being equal to 7. What will be the other case? अदर केस में क्या हो जाएगा? जो आपका 5x plus 7 है, इट विल टेक नेगेटिव वैल्यू -42. तो ये क्या हो गया? 5x is -7 minus 42 is -49. x is -49 by 5, which is -9.8. So x can take up either -9.8 or it can also take up 7, which is option A. Very good, superb Shrey, Rishi, beautiful, है ना? Quickly solve this. इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ. जल्दी. So what is the situation? Modulus 3x plus 9 is equal to -6. Jaldi. Shrey says B, -5. Others? Shreyashi also says B. Okay, please understand this is actually a trap. -5 is a trap, guys. Common logic. मॉडुलस का कोई भी वैल्यू, मॉडुलस में कुछ भी हो, 3x plus 9 या जो भी एक्सप्रेशन है, वो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा रहता है ना? 3x plus 9, मॉडुलस 3x plus 9 should always be positive. 3x plus 9 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, that doesn't matter, but modulus 3x plus 9 must always be -6. Yes, the answer is none of these because no solutions exist. No solutions exist for this. Why? अभी जैसे ऋषि बोल रहे कि 1 and -1, अगर मैं x को 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? Modulus of 3 into 1 plus 9, this is 12. Modulus 12 is equal to -6 or 12 is equal to -6, not possible. Even if I put in -1, मैं -1 भी डालूंगा तो क्या हो जाएगा? What will I get? Modulus 3 into -1 plus 9 is -6. तो क्या हो गया? This becomes 9 minus 3. Modulus 6 is -6, which is not true. 6 is not equal to -6. आप कोई भी वैल्यू डाल दो, यहां पे नहीं वर्कआउट करेगा. Yes.
x को अगर आप -5 डाल रहे हो, इफ यू पुट x एज -5, क्या हो गया? -15 + 9 is modulus -6 equal to -6. Is it true? Definitely not. Modulus निकालते ही क्या हो गया? 6 हो गया. 6 is equal to -6? No. Yes, the answer is none of these. This is a very common kind of a trap. Please don't fall under this. मॉडुलस लगाने के बाद कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता. 0 और ग्रेटर देन 0 ओनली. ठीक है. हेलो मयांक, वेलकम. अब ये वाला ट्राई करो. सॉल्व दिस. सॉल्व मॉडुलस x + 3 शुड बी इक्वल टू मॉडुलस x - 11. क्विकली ट्राई दिस. Modulus x + 3 is equal to modulus x - 11. Quickly try this. Shreyashi says D. Others? Shreya says C. Okay. So अगर आपके दोनों साइड पे मॉडुलस है, look, if both sides are modulus, then what will you have to consider? You will have to consider 3 cases, both being positive, first one negative, second one positive, second one positive, first one positive, second one negative. क्योंकि ये दोनों सेम ही होंगे, this would be the same only. The only possible thing would be what? Apply positive positive and positive negative. Yes, अगर दोनों पॉजिटिव है मतलब x + 3 is equal to x - 11. क्या हो गया? x और x कैंसल हो गए. 3 is equal to -11 does not exist. Yes, that means positive में इनका कोई solution नहीं है. So what will be the only possible outcome? Positive negative. एक term positive, दूसरा negative. तो x + 3 is equal to -x - 11. Yes, what will it give us? x + 3 is -x + 11. x यहाँ पे आ गया. x + x 2x. 11 - 3 is 8, giving us what? X is equal to 4. Yes, this is the only solution. Only solution for this. Understood? Whenever you have both sides modulus, LHS भी modulus में है, RHS भी modulus में है, then you have to be extra careful because you will have to take 2 cases. One, LHS, RHS दोनों आपका पॉजिटिव है, both are positive, और you will have to take LHS, RHS कोई भी दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव. तो मे बी अगर पहला वाला पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरा वाला नेगेटिव, या अगर पहला वाला नेगेटिव ले रहे हो तो दूसरा वाला पॉजिटिव. ठीक है. Yes Ajay, you can apply reverse engineering also. Definitely you can apply reverse engineering, but 4 जो है 4 is satisfying here, here and here. That means you will have to apply -11/3 also and 11/3 also to check. तो डायरेक्ट करने में जितना मेहनत नहीं लग रहा उतना रिवर्स इंजीनियरिंग में लग रहा है ना. एक्सेप्शनल केस है बट यस. हाँ ऋषि, कर सकते हैं. ठीक है. डन. ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट गाइस, a lot of plus batches have been started. I am starting a plus batch on 4th of September. Saturday, Sunday weekend classes होंगे. We will be doing weekend classes in the afternoons. मतलब ना तो आपका कॉलेज या वर्क डिस्टर्ब होगा, ना आपके वीकेंड्स के इवनिंग्स डिस्टर्ब होंगे. ठीक है. So if you want to enroll into this, you can join this using my code Surana Live, जिस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है. एंड ऑल्सो टूडे 8 PM, आज 8 बजे अपन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट्स पे सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं. विल बी डूइंग सम इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस, LOD 2 टाइप क्वेश्चंस करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. व्हेन यू लॉग इन, यूज माय कोड Surana Live to register.
Now let's talk about greatest integer function. Yes, greatest integer function में क्या होता है? These are floor functions और floor function ceiling functions बोलते हैं इसको, correct? We call them floor function ceiling functions. Yes. So what does greatest integer function do? It ensures that whatever is the solution, जो भी आपका वैल्यू है उसका greatest possible integer क्या हो सकता है. So greatest integer function ऐसे डिफाइन होता है. It's defined like this. Yes, greatest integer function ऐसे डिफाइन होता है और इसमें क्या होता है? x can be any real value. x could be any real value. तो आपका जो f of x का वैल्यू होगा that will be greatest integer less than equal to x. Yes, greatest integer that is less than equal to x. समझ गए? Yes, this is called floor function. Okay, this is how the graph for it looks like. Yes, ग्राफ में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कोई टेंशन नहीं, अपन एक एग्जाम्पल सेट लेके देखेंगे. Yes, have a look at the set. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर they are saying f of x is greatest integer of x. ये क्या है? greatest integer. So if f of x is greatest integer of x, then find the value of f of x for given values of x. ये अगर x है तो आपका f of x क्या होगा, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें ये ध्यान में रखना है, कि अपना f of x का वैल्यू is going to be what? greatest integer less than or equal to x. Yes, तो 4.1 से नीचे के वैल्यूज क्या क्या है? 4.1 से नीचे के वैल्यूज क्या क्या होंगे? सो अपना f of x क्या होगा? इंटीजर दैट इज लेस देन x, लेस देन और इक्वल टू x. मतलब क्या क्या हो सकता है? वी कुड हैव 4, वी कुड हैव 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन. यस, बट इनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 4. यस, सो f of x क्या होगा? 4 होगा. Got it? Can you try the second one? 7.999. When x is 7.999, तब f of x का वैल्यू क्या होगा? क्विक, जल्दी से बताओ इसका आंसर गाइस क्या होगा? Anyone? Okay, अजय से 7, others? तो हमें क्या लेना है? 7.999 we understand is very close to 8, but हमें वो नहीं करना है. हमें क्या करना है? We have to take values less than 7.999. Yes, integers less than 7.999. तो क्या है? 7, 6, 5, 4 all the way till negative infinity. इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 7. So f of x will become 7. Understood? Yes. समझ गए ना? Try the third one. -1.56. Quickly try this. -1.56. क्या होगा इसका आंसर? -1.56. -1, -2, ध्यान में रखो, वी वॉन्ट वैल्यू इंटीजर्स लेस देन -1.56. लेस देन -1 क्या है? -2, -3, -4 नेगेटिव इन्फिनिटी तक. तो इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? -2. तो सर आंसर -2, नॉट -1. ठीक है,
अजय क्लियर है? यस, बिकॉज -1 इज ग्रेटर देन -1.56. हमें ग्रेटर नहीं चाहिए. व्हाट डू वी वांट? लेस देन इक्वल टू -1.56. ठीक है, ये वाला करो. √3. व्हाट अबाउट √3? व्हाट अबाउट √3? हाँ, नो इश्यूज अजय, कोई नहीं. 1, वेरी गुड. तो √3 क्या है? 1.7. 1.7 से नीचे का वैल्यू क्या है? 1. -√9. एनीवन? -√9. हेलो वर्ल्ड वॉइस. व्हाट अबाउट -√9? we're looking for integer values that are less than -√9. -√9 क्या है? -3. yes, but what do you have to keep in mind? Less than equal to. yes, less than equal to, not just less than but also equal to. less than equal to -3. तो क्या क्या होगा? -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, ऐसे. yes, sorry, other way around. we will have -3, -4, -5, so on. yes, तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? -3. इज दैट क्लियर गाइस? -4 जो भी बोल रहे, ऋषि, कृष्णा, लेखना, समझ गए? श्रेय, नो वैल्यू नहीं होगा, -3 होगा. गॉट इट? इसमें किसी को कोई डाउट गाइस? If anyone has any doubts in this, please ask. Please understand, if the term itself is an integer, if x itself is an integer, then greatest value function of x will be x itself. समझ गए everyone? कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है, -3 इज द राइट आंसर, नॉट -4. नाउ वी गो टू प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. फर्स्ट प्रॉपर्टी, f of x is equal to greatest integer function of x plus k. तो all you have to do is keeping in mind आपका k जो है, if k is an integer, if k is an integer, then you can directly take k outside. अगर k इंटीजर है तो आप उसको बाहर ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से f of x is equal to greatest integer function of x plus 5, क्योंकि ये कांस्टेंट 5 इंटीजर है ऑलरेडी, सो व्हाट हैपेंस? इट बिकम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x plus 5. गॉट इट? yes. Same way, greatest integer function of -x will be minus greatest integer function of x only if it is an integer. yes. What is greatest integer function of -4? अगर आपका टर्म, अंदर का टर्म ऑलरेडी इंटीजर है, then it will be -4 itself. yes, जो अपन ने देखा था प्रीवियस केस में, -3 के केस में. What if it is not an integer? What if it is not an integer? Let's say if we have -4.8. yes, -4.8 अगर है तो आप क्या करोगे? This will be equal to greatest integer possible of x minus 1. yes, giving us what? -4.8 minus 1. clear? yes. same way f of x का भी सेम सीन है. ओके, चलो, we'll quickly try some questions. let's go ahead, try some questions.
find the value of x such that modulus नहीं है, greatest integer function of x plus 3 is 3. Quickly try this. Anyone? Krishna says D, Rishi says D, very good, superb. D. Yeah, what would happen here? Greatest integer function of x plus 3 is 3. That means greatest integer function plus 3 is 3. That basically means greatest integer function of x is 0. Yes. इसका क्या मतलब हो गया? Greatest integer function of x is 0. That doesn't mean x can only be equal to 0. x का जो वैल्यू है सिर्फ 0 होना जरूरी नहीं है. x देखो, अभी मैं नंबर लाइन डाल के बताता हूं, ठीक है? नंबर लाइन डाल के बता रहा हूं. यहां पे आपका 0 है, ठीक है? और यहां पे 1 है. Whatever value I put between these, 0 से लेके 1 तक, 1 not included, 0 से लेके 1 तक के बीच में मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा, मेरा greatest integer value will be 0 only, right? For example, if x is 0.2, तो what will be greatest integer function of x? 0, right? 0.2 किधर आता है? 0.2 इधर आता है. तो क्या करना है? नंबर लाइन में उस नंबर से लेफ्ट जाना है और क्लोजेस्ट इंटीजर लेफ्ट जाएंगे तो क्या है? 0. गॉट इट? तो अपना जो x है, इट कैन टेक अप एनी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट हैज टू बी लेस देन 1. गॉट इट? x जो है 0 और 0 से बड़े वैल्यूज ले सकता है बट लेस देन 1. अगर मैं बोलूं कि x 1 है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बिकम 1 नॉट 0. यस, क्लियर? सो ये क्या है? 0 से लेके 1 तक 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड. गाइस, फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर कैट काइंड ऑफ टेस्ट. ओके. Also, if you're looking for plus subscription, you can take the 6 months, 18 months or 24 month subscription. Use my code Surana Live for a 10% discount. Yeah. And if you're looking for iconic subscription, same. Use my code Surana Live for a 10% discount. ठीक है? आपके prices 14 सितंबर से 16 सितंबर से बढ़ने वाले हैं 10%. So if you want to take a subscription, take before that. Yes, take subscription before 16 September. All right. Again, don't forget to use Surana Live, 10% discount. Now let's go to fractional part function. Yes, fractional part function का क्या scene है? It is represented as curly brackets. Yes, it is represented as curly brackets. In most cases they will define it. Question में define करेंगे. Okay. So what is it? If f of x is fractional part of x, that is x minus greatest integer function of x will give you that. For example, अगर मैं बोलूं कि x is 2.7, then what is f of x, which is fractional part of x, will be equal to x minus greatest integer of x. Yes, x क्या है? 2.7. greatest integer of x क्या है? 2. So your fractional part is 0.7. Got it? Fractional part is nothing but the difference between
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x एंड x, ठीक है, गॉट इट. विल ट्राई सम एग्जांपल्स हियर, ट्राई करो. if f of x is equal to fractional part of x, then find out what will be f of x is 1. आंसर करो ये वाला. अगर आपका x 1 है तो क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट? एनीवन? कोई नहीं. f of x is what? Fractional part of x, which is nothing but x minus greatest integer of x. अब ये बोल रहे कि x 1 है तो f of 1 क्या हो जाएगा? Fractional part of 1, that is 1 minus greatest integer function of 1. Greatest integer function of 1 क्या है? 1 only, क्योंकि 1 itself is an integer, so the fractional part will be 0. Got it? I hope ये आप लोगों को समझ में आ रहा हो. समझ में आ रहा है ना ये आपको? अभी पाई का प्रिसाइज वैल्यू हमें नहीं पता, तो लेट्स अस्यूम पाई इज 22/7. लेट्स अस्यूम पाई इज 22/7. यस, विच इज व्हाट? 3.142857 बार. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस बताओ, या इसको चलो थोड़ा सा इजी कर देते हैं. 3.14. क्विक. Superb. Krishna says 1/7. Others? Let's assume it to be 3.14. Make it a little simple for us. So if x is 3.14, then f of 3.14 will be what? 3.14 minus greatest integer function of 3.14. Which is 3.14 minus 3, that is 0.14. Got it? If you go precise, then it is 0.142857 bar, या 1/7, either which ways. We'll do one more, फिर बाकी के 2 होमवर्क दे दूंगा. ये वाला ट्राई करो. minus 1.56. Quickly try this. minus 1.56. What will be the fractional part of this? जल्दी से. ये वाला ट्राई करो. minus 1.4656. Very good. 0.44, not 0. Yeah, 0.44 is right. Super. क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? If x is minus 1.56, then f of minus 1.56 is what? Minus 1.56 minus of greatest integer function of minus 1.56. Yes, which is minus 1.56. माइनस माइनस तो प्लस हो गया. what will be an integer less than minus 1.56, which is the greatest? -2. correct? so minus of -2 plus 2 हो गया. this will give us what? 0.44. clear? it's very important that you don't fall into such silly traps. Greatest integer function of minus 1.56 is -2. okay, so the other 2 you can try it at home. At home. okay, now let's talk about some properties of fractional part function.
अगर x आपका 0 और 1 के बीच में है तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 if x is an integer. Yes, fractional part of x plus fractional part of minus x will be 0. Again, x is an integer. X plus minus x is 1 if x is not an integer. Yes, ये वाला जरूरी है, not an integer. For example, अगर मैं बोलूं if x is let's say 1.5. Yes, if x is 1.5 then the fraction, yeah, 1.4, then the fractional part of 1 by 4 plus fractional part of minus 1 by 4 will be equal to 1. Check करेंगे कैसे? What is fractional part of 1.4? 0.4. What is fractional part of minus 0.4? 0.6. बराबर? Which is equal to what? 1. Yes. Any doubts here? Anyone, any doubts? And also, if you want to find out the fractional part of a by b, that will basically be the remainder divided when divided by b. Yes, remainder when a by b is divided. So we'll try some questions. Have a look at this. Find x such that x square plus fractional part of x the whole square is 27. ये अगर रिवर्स इंजीनियरिंग होता तो ये काफी सिंपल हो जाता. यस, इफ दिस वे रिवर्स इंजीनियरिंग तब तो ये बहुत सिंपल हो जाता. नाउ दैट इट इज नॉट, इट्स अप टू अस टू ट्राई इट आउट. जल्दी से ट्राई करो. फाइंड x गिव मी एन अप्रोक्सीमेटेड आंसर. थीटा है, अप्रोक्सीमेट टू 4 decimals. यस, अप्रोक्सीमेटेड टू 4 decimals. चलो जल्दी से करो. Anyone? For what value of x will x square plus fractional part of x square be equal to 27? नहीं आ रहा है? ओके, सो बिकॉज देर आर नो आंसर चॉइसेस हियर, क्योंकि यहाँ पे आंसर चॉइसेस नहीं है, विल हैव टू ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच हियर. यस, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? लुक एट दिस. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? इट विल बी समथिंग दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट डेफिनेटली लेस देन 1. करेक्ट? फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 से तो कम ही होता है. यस, इट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वाई? बिकॉज पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो जाएगा नहीं. देन व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x? इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगेन 0 square is 0, 1 square is 1. Yes, so modulus
सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x द होल स्क्वायर विल लाई बिटवीन 0 and 1. ये तो क्लियर हो गया अभी, दैट पार्ट इज क्लियर. Now what are they saying? They are saying that हमें पता है कि fractional part of x is nothing but x minus greatest integer function of x, correct? Yes, agreed. तो यहां पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? What is x? x will become fractional part of x plus ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना. फॉर आवर यूसेज, अपने यूसेज के लिए अपन इसको r बुलाएंगे और इसको n बुलाएंगे, जस्ट फॉर आर यूसेज, अपने को थोड़ा सा इजी होगा इसलिए. ठीक है. सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट x इज नथिंग बट r प्लस n. तो अपना काम क्या अभी? r और n ढूंढने का काम है. दैट्स इट. यस, आर वर्क इज टू फाइंड आउट r एंड n. ओके. Now one thing is clear, look at this. ये x स्क्वायर है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर है. क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट आपका 1 से तो डेफिनेटली कम रहेगा, मतलब आपका your x must lie between 5 and 6. यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा नंबर देख के. क्यों? क्योंकि 27 बोल रहे हैं, राइट. दिस वुड बी व्हाट? मैक्सिमम 25 प्लस सम फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर गिविंग यू 27. तो x का वैल्यू हैज टू बी बिटवीन 5 and 6, कांट बी इक्वल टू 5, क्योंकि अपन ने ट्राई किया. 5 स्क्वायर 25 प्लस 0 इज 25, नॉट 27. गॉट इट? यस. So what is clear? It is clear that आपका जो n है, that is greatest integer function n क्या है? greatest integer of x. तो x is what? 5 से लेके 6 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, ये क्या हो गया? 5 हो गया. यहां तक क्लियर है तो एक बार हाँ बोल लो गाइस. अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज एक बार हाँ बोलो, तो मैं आगे समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा. एनीवन? अगर कोई डाउट है यहां पे तो पूछो एक बार गाइस. या ओके. सो n's वैल्यू इज फिक्स्ड. n विल बी व्हाट? 5. यस, n का वैल्यू इज 5. दिस इज 5. इट इज फिक्स्ड. नाउ आवर एम इज टू फाइंड आउट व्हाट? Now our aim is to find out what would be the fractional part of x. Yes, we have to find out what? Fractional part of x. Yeah. तो x क्या है? What is x? n plus r. तो अपन क्या करेंगे? ये वाले में x square plus फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर इज 27 में x के जगह पे n plus r लगाएंगे. So what do we have? n plus r the whole square plus ये क्या है? r square is 27. Yes, n अपना 5 है, we know, so we can write this as 5 plus r square. If I open this up, what will happen? We will have 25 plus 10r plus r square plus this r square is 27. So you have an equation, quadratic equation, that says 2r square plus 10r minus 2 is 0. Do you all agree with this? ये equation तक clear है? Yeah. Now to solve this, we know we can't factorize it. इसको factorize नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? We will go by the quadratic formula, minus b plus or minus. So to make it a little simple, पहले divide this by 2. If I divide this by 2, it becomes r square plus 5r minus 1 is 0. Yes. तो r का वैल्यू क्या हो सकता है? माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, which is what? minus 5 प्लस और माइनस under root b square 25 minus 4 times a times c is plus 1 by 2 times a, that is 2. Yeah, so what are you getting?
possible values of r could be -5 plus root 26 by 2 or -5 minus root 26 by 2. Make sense guys? ये clear है क्या? Sorry, +4 +4, this is not +1, this is +4, so giving us root 29. Any doubts here guys? किसी को भी है ना? 29 होगा, sorry, my bad. Now because we can't have negative, r is, this is a positive value, x अपना positive value है, that means fractional part should also be positive, है ना? ये देखो, yes, so our r has to be greater than equal to 0 or less than 1, that means it can't be negative. So what is the possible value of r? -5 plus root 29 or 29 root 29 minus 5 by 2. Is that clear guys? तो अब अपन x आराम से ढूंढ सकते हैं. Now we can directly find x. How? We have x is equal to r, which is root 29 minus 5 by 2 plus n, which is 5. Yes, so if we take the LCM, what will we get? Root 29 minus 5 plus 10 is plus 5 by 2, which is how much? Root 29 approximately is 0.385. No, root 29 कितना हो जाएगा? Root 29 will be a little over 5. Yes, a little over 5, 5.38. So this is 5.3851 plus 5 by 2, giving us what? 10.3851 by 2, which is nothing but, if I divide this by 2, I will get 5.1925. So the answer to this question is 5.1925. It is a long question, it is a complex question, it's not one of these easy questions that get asked. Yes, but something very similar to this was asked in one of the old CATs. Yes, one of the old CATs, a very similar question was asked. Normally it would make sense for us to skip it because of its complexity, but if you have the time and you want to solve it badly, then this is how you will. Clear guys? Any doubts with this? So if you want, you can try this also. Check करो, plug in करके check करो क्या हो जाएगा. 5.1925. Yes, 5.1925 का स्क्वायर क्या है? So if I say 5.1925 square plus 0.1925 square, correct? So 5.1925 square is 26.96 and 0.1925 square will be very close to 0.04. So what are you getting? 27. Checking. अगर रिवर्स इंजीनियरिंग होता, अगर आंसर चॉइसेस होते रिवर्स इंजीनियरिंग होता, तो we would have directly jumped to reverse engineering, not done all this stuff. Okay, all right, let's try the next set of questions. Hello Navni, how are you doing? I hope you're doing well. बहुत दिन हो गए, long time no see. Superb. Abhijit, Lekna, Shreyashi. Hello Ravi, definitely I can help you with CAT. What doubt do you have? If you want Ravi, you can drop a message to me on Telegram. This is our Telegram group, Surana Live CAT. You can join this and ask doubts here also. Okay.
Read this question. What are they saying? Find the smallest real number m such that for all positive real numbers x, fractional part of x plus fractional part of 1 by x should be less than m. What is the smallest real number m? Quickly do this. थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ट्राई करो, लेट्स सी इफ यू कैन गेट इट. हाँ, wow, superb Navni, very good, great job, super proud of you. बहुत बढ़िया. I am Kolkata, yes, way to go. Navni, drop me a message on Telegram. No, we'll talk about it. आप मेरे को Telegram पे message करो Navni. Yeah, we'll talk about it. Okay. Right. Anyone answer for this? So the problem with this question is it is too complex. Yes, this question is too complex. Only thing that could have helped us, the only thing that could have helped us would have been what? Answer choices, correct? If there were answer choices, then we could have gone reverse engineering and at least given it a shot. I'll show you the complexity of this question. This is actually one of the questions from advanced mathematics which don't get asked in CAT. Yes, advanced mathematics ka question hai ye. So have a look at this, okay? For an example, let's assume x. Let's assume x to be 1.2. Yes. For instance, let's take x is what? 1.2. If x is 1.2, what would happen? Fractional part of x plus fractional part of 1 by x will be less than m. Agreed? What is fractional part of x? 0.2 plus, okay, let's take 1.5 to make it a little simple. 0.5, and what would be the fractional part of 1 by 1.5? This should be less than m. Just giving you an understanding of it. Yes, sorry, fractional part of 1.5 and this. So fractional part of 1.5 is 0.5 plus, what is 1 by 1.5 guys? 1.5 is 3 by 2, so this will become 2 by 3. है ना, ये क्या हो जाएगा? 2 by 3 हो गया, reciprocal. So fractional part of 2 by 3. This has to be less than m. Yeah, because there's nothing given about m, nothing told about m, ना तो limit दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है. Trial and error will only make it more complex. Do you agree? 2 by 3 is what? 0.6666. So this will be 0.6666. Or 2 by 3 itself is the fractional part. So 0.5 or 1 by 2 plus 2 by 3 should be less than m. Are you getting this? So what do we end up getting here guys? यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? We will end up getting 3 plus 4, 7 by 6. Yes, but now we are not even sure. हमें कुछ पता भी नहीं है m के बारे में. Yes, so this is too advanced for trial and error. Trial and error will never work here because it is too advanced for it. So I put up this question only to show you if a question like this comes up. अगर ऐसा कोई question आपको दिख जाए, right? The best thing to do is skip. Yes.
because they intentionally put up questions like this so that you don't score 100 full 100 percentage. 100 percentile तो ठीक है, 100 percentage ना स्कोर कर पाओ इसलिए ऐसे क्वेश्चंस देते हैं. डन. हाँ बस भागो. ट्राई करो बट जाने दो, क्योंकि अगर आंसर चॉइसेस नहीं है देन इट्स नो यूज थिंकिंग अबाउट इट. ठीक है, चलो अभी आगे ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ट्राई दिस क्वेश्चन. ये वाला ट्राई करो. These are extremely complex questions. एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आप डेफिनेटली कैट में नहीं मिलेगा आपको ऐसे क्वेश्चंस, है ना. They're saying n is greatest integer function of x into greatest integer function of x such that n is the number of natural numbers less than 2009 and x is a positive real number. Find the sum of digits of n. Yes. तो n क्या है? n is nothing but number of natural numbers that are less than 2009, है ना. तो n क्या हो सकता है? how many natural numbers are less than 2009? 2009 से लेस के कितने नेचुरल नंबर्स है? 1 से लेके 2008 तक, तो कितने? 2008 है. बट दिस इज व्हाट? मैक्सिमम. यस, दिस इज व्हाट? मैक्सिमम. अंडरस्टूड. हमसे क्या बोला है कि n इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑफ दिस. So I'll give you a taste of it. If I say x is 1.5, if I say x is 1.5, then what is n? Greatest integer of 1.5 into greatest integer of 1.5 का greatest integer. तो ये क्या हो गया? Greatest integer of 1.5 into 1, है ना. This is what? Greatest integer of 1.5, which is nothing but 1. Understood? तो यहां पे n का वैल्यू क्या होगा? 1. So x को, क्योंकि x is a positive real number, yes, if x is greater than 0 and x is greater than 0 less than 1, n का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. yes, but because n is the number of natural numbers, 0 नहीं काउंट होगा. that means we'll go on to what? x being greater than 1 less than 2. यहाँ पे n का वैल्यू 1, x being less than 3 greater than 2, yes, equal. n का वैल्यू होगा 2. ऐसे करके करोगे you will go all the way till what? 2008. yes, 2008. so find the sum of digits of n. what would be the sum of digits of n? Sum of digits will be what? 2 plus 0 plus 0 plus 8, that is. ठीक है. Understood. n will start taking all natural numbers. n आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 2008 तक जाएगा. yes, I hope that is clear. okay, चलो. now before we finish, okay, we still have least integer function. अभी तक least integer function है. before that, if you're planning on taking plus,
where you will get unlimited live classes, unlimited weekly tests, study materials, unlimited access to everything on the app, and structured courses. If you take Iconic, you will get all of these, plus you will get personal guidance, you will get a study planner, you will get one-on-one live mentoring, you will get personalized test analysis and expert guidance also. Yes, so don't forget to use my code Surana Live when you take the subscription to get 10% discount. Chalo, this is the last concept, least integer function. Just like greatest integer function is called ceiling floor function, this is called ceiling function. Yes, इसमें function का symbol उल्टा है. Got it? इसमें क्या है? Symbol उल्टा है. If this is greatest integer function, this is called what? Floor function. Yes, this is least integer function, which is called ceiling function. Yes. यहाँ पे क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट सेम है, बट वी हैव टू गो फॉर द लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स. दैट्स इट. यस, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स. तो वी विल ट्राई दिस. इफ एफ ऑफ एक्स इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड x का वैल्यू अगर 3.1 है, तो ये क्या हो जाएगा? What will happen here? If x is 3.1, then the least integer function of x will be what? Least integer function of x क्या हो जाएगा? This has to be greater than equal to x, but least value. Yes, least value but greater than equal to x. मतलब क्या? This one will be greater than equal to 3.1. तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं इसके? कैन टेक अप 4, 5, 6, 7 ऑल द वे टिल पॉजिटिव इंफिनिटी. तो इसमें से लीस्ट वैल्यू क्या है? इसमें से लीस्ट वैल्यू क्या है? 4. दिस विल बी द C. दैट्स इट. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वी गो लेफ्ट towards the number line. Yes, left on the number line. Correct. Least integer function में what do? We go right on the number line. That's it. Number line के right में जाना है, closest number. That's it. Closest number to the right of the number line. Yeah. Can you try the second one? What is the least integer function of 12.998? 12.998 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन. वेरी गुड अजय, ऋषि, सुपर. 13, ब्यूटिफुल. तो 12.998 के राइट साइड में क्या क्या नंबर्स होंगे? 13, 14, 15. इसमें से सबसे कम क्या है? 13. दैट्स इट. ब्यूटिफुल, वेरी गुड मयंक. या व्हाट अबाउट दिस गाइस? -5.46. What about -5.46? Very good. -4. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या आता था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में द आंसर वुड हैव बीन -6 लेफ्ट में. यहां पे क्या है? राइट में. बट क्या राइट में -4 इज द लीस्ट? क्या राइट में -4 इज द लीस्ट? प्लीज थिंक अबाउट दिस केयरफुली. तो नंबर लाइन डाल लो. अगर आपको कंफ्यूजन होता है ऐसे केसेस में, पुट अप अ नंबर लाइन. अगर ये -4.6 है, इफ दिस इज -4.6, यस, तो इसके राइट में क्या क्या आएगा? यहां पे -5 होगा, फिर -4 होगा, फिर -3 होगा, एंड सो ऑन. यस, तो लीस्ट इंटीजर क्या होगा इसमें? लीस्ट इज -4 नहीं, -5. ठीक है. राइट साइड का लीस्ट वैल्यू, लेफ्ट साइड का ग्रेटेस्ट वैल्यू. दैट्स इट. ओके, डन. चलो, तो द रेस्ट यू कैन डू इट, राइट? द अदर 2 आर फॉर यू ऑल टू ट्राई होमवर्क. ओके, नाउ let's start answering this question.
रीड द फंक्शन केयरफुली गाइस, प्लीज रीड द फंक्शन केयरफुली. फंक्शन पढ़ने में गलती मत करना, ओके? डोंट मेक अ मिस्टेक इन रीडिंग द फंक्शन. लेट्स सी इफ यू ऑल कैन ट्राई दिस क्विकली. C, everybody say C. C is wrong, no? ध्यान से देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर नीचे की तरफ है, इफ द बार्स आर टुवर्ड्स द बॉटम देन दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. If it's towards the top, then it is least integer function. Correct? Please guys, okay? So what do we want? Greatest integer function of 2.4 will be how much? इसका 2.4 का क्या हो जाएगा? 2. Correct? नंबर लाइन डालो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नंबर लाइन डालो. अगर यहां पे 2.4 है तो यहां पे क्या है? 2, 1, 0 ऑल द वे टिल नेगेटिव इंफिनिटी. इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? इंटीजर फॉर्म 2. सो व्हाट इज दिस? 2 प्लस व्हाट्स द नेक्स्ट सिनेरियो? लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.9. तो अगर आपका 2.9 इधर है, इफ योर 2.9 इज हियर, देन वी हैव टू गो टू द राइट. यस, 3, 4 सो ऑन. लीस्ट इंटीजर क्या होगा यहां पे? 3. यस, सो दिस इज 2 plus 3 which is 5, not 6, not 4, 5. आई होप दिस इज क्लियर, है ना? हाँ वही कॉमन मिस्टेक है, प्लीज डोंट रिपीट दिस. ओके, एवरीबडी हु सेड सी, एक बारी चेक कर लो इसको. कोई डाउट है तो पूछो, वरना आगे चलेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क, अदरवाइज विल मूव अहेड. आगे चलेंगे. नाउ सो फार वी हैव सीन लीस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर भी देख लिया, लीस्ट इंटीजर भी देख लिया. Now what we are looking at is nearest integer. Nearest integer function is what you do when you round off. आप लोग अपन बचपन में करते थे, राइट? राउंड ऑफ करते थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 7.8, वी राउंडेड ऑफ टू व्हाट? 8. यस, इसको अगर राउंड करना है तो राउंड ऑफ टू 8, बराबर. इफ इट वॉज 7.2, वी वुड राउंडेड ऑफ टू व्हाट? अगर 7.2 है तो उसको क्या राउंड ऑफ करेंगे? 7. इज इट मेकिंग सेंस गाइस? ठीक है. व्हाट इफ इट इज 7.5? 7.5 विल इट बी राउंडेड ऑफ टू 7 और टू 5? जल्दी बोलो. 7.5 को आप राउंड ऑफ करके 7 करोगे या 8 करोगे? क्विक. 7.5 का नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, नहीं इंटीजर चाहिए ना ऋषि, इंटीजर चाहिए. वी वांट इंटीजर. सो लुक एट दिस. ये जो होगा यहां पे सिचुएशन ऐसा होगा, देखो. अगर मैं बोलूं कि आपका x इज ग्रेटर देन 7, लेस देन इक्वल टू 7.5, देन इसका नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 7 होगा. इफ इट इज ग्रेटर देन 7.5, लेस देन इक्वल टू और लेस देन 8, सॉरी द अदर वे अराउंड, राइट? ऐसे. यस, यहां पे 7 होगा, यहां पे नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी 8. नहीं, बराबर ही है. नो, I was right only. Yeah. Here. Okay. अगर 7.5 से ज्यादा है और 8 से कम है तो 8 होगा.
अगर 7.5 तक है, 7.5 इंक्लूडेड, देन इट विल बी 7 ओनली. तो इसका राउंड ऑफ विल बी 7 ओनली. गॉट इट? लेट्स ट्राई दिस आउट. Okay, these are some properties. We need not get into the complexity of it. इतना complex करने की जरूरत नहीं है. चलो फटाफट ट्राई करेंगे. If f of x is nearest integer function of x, then if x is 2.3, तो nearest integer क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो इसमें. x अगर 2.3 है तो nearest क्या होगा guys? 2. Very good. What about the other case? 4.6 में क्या हो जाएगा? What will happen in 4.6? 4.6 में 5 हो जाएगा. ब्यूटीफुल. What about minus 5.46? What about minus 5.46? minus 5, yes, minus 5. अगर माइनस है तो आपको कुछ भी नहीं करना है. इफ इट्स minus 5.46 का नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन is basically what? Minus of the nearest integer function, minus of nearest integer function of 5.46. yes, इसका अगर 5 है तो इसका क्या हो गया? -5. what about root 5? what about root 5 guys? root 5, we all know that root 5 is, will it be 2 or 3? we know that root 5 is less than 2.5. correct? क्यों? क्योंकि 2.5 square is 6.25. yeah, so this is definitely less than 6.25, so it has to be less than 2.5. since this is less than 2.5 but greater than 2, what would it be? 2. super, very good. चलो, now let's do some general questions. greatest least integer function के बेस पे general questions. quickly try this. ये क्या सिंबल है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का. ओके, डोंट मेक अ मिस्टेक हियर. ऑलराइट, Krishna says A 0. okay, sure. Rishi says B 1. okay, others? since they are asking for the maximum value, yes, since they are asking for maximum value of what? greatest integer of x and y, and they are saying x, y are both less than 1 but are greater than 0. positive है ना? positive, so greater than 0 but less than 1. if we go for the maximum value, we want the maximum value of this entire thing. that means we will need maximum value of x and y. x का या y का maximum value will be what? जितना भी जाओ, 0.999999 as much as you can. yes, 0.9999 so on. correct? Can I say this is nothing but 0.99999 is nothing but 1 by 11? Not 1 by 11, sorry. This will be what? 9 by 11. Still no. 10 by 11, correct?
10 by 11, agreed? Yes. Not even 10 by 11. 1 by 3 is 0.333. So this has to be 3 by 3. It comes up to 1 only. Chalo, theek hai. Let's call it 0.99. Okay, for our benefit, let's call it 0.99. Shall we? Yes. So what will be the maximum value of 0.99 plus 0.99 ka greatest integer? This will come up to what? Unless and until it is 1 and 1, unless and until both are 1, we will not get 2. So this will have to be what? 1.98. So the greatest integer less than 1.98 has to be 1. No other choice, can't be 2 at all. 2 आने के लिए, for it to be 2, x or y has to be greater than 1. Correct? Or at least equal to 1. Done? Chalo. Now let's try this out. Read the question carefully, don't rush into it, okay? आराम से पढ़ना इसको. It's very simple and very doable as well. काफी simple है, काफी easy है. Try करो. Let's see how many can answer it. We have to find the domain of the function f of x is 1 by square root of pi minus x. 1 by square root of pi minus greatest integer function of x. Okay, please be careful about that. Try करो इसका domain ढूंढो. Domain. We have a couple more questions on this domain basis, so let's try this, okay? Fastest way to answer this is using reverse engineering. Fastest way to answer is using reverse engineering. Okay, Krishna and Lekhna are saying B. For our usage, let's assume pi is equal to 3.14. okay, let pi be 3.14. make it a little easy for us. So here let's try this. So f of x or y is what? 1 by square root of 3.14 minus greatest integer of x. Correct? क्योंकि ये square root में है, because this is in square root. Yes, if there is a square root, then what do we know? इसके अंदर का जो value है, has to be greater than equal to 0. Also, since this is in fraction, क्योंकि ये fraction में है, तो it is clear that it has to be greater than 0. नीचे का value has to be greater than 0. 0 नहीं हो सकता. 0 हो गया तो 1 by 0 not defined. Yes, negative नहीं हो सकता, तो has to be positive. Yeah. Go reverse engineering on this now. Let us try with C first. 4 डाल के देखते हैं क्या हो जाएगा. If x is 4, then y will become what? 1 by square root of 3.14 minus greatest integer of 4. Yes, giving us what? 1 by square root of 3.14 minus 4. Negative हो गया है ना. Under square root we have negative 0.86. Won't work out. So 4 doesn't work out, but what if it's a value less than 4? If I say x is, for example, 3.9,
If x is 3.9, then what will happen? Y will become 1 by square root of 3.14 minus greatest integer of 3.9, which is what? 1 by square root of 3.14 minus what is the greatest integer of 3.9 guys? बताओ मेरे को. Greatest integer of 3.9, will it be 4? 3.9 का nearest नहीं, greatest integer. What will it be? 4 या 3? 3. Yes, तो क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में we have 1 by square root of 0.14, it is allowed. Yes, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया? You have positive value, which is a good sign. तो option A is right, not even option B. Yes, because 3.9 इसमें नहीं है, and 3.9 agrees with this. Got it? Reverse engineering would be the fastest way to answer this. Clear? But what is the problem guys? What is the problem? अगर अपन reverse engineering से करते तो we have none of the above. Yes, तो risky है. So if you want to overcome the risk, what will you do? You will start playing with this inequality. Yes, so square root of pi minus greatest integer function of x should be greater than 0. What does it mean? It means pi minus greatest integer function of x must be greater than 0. Agreed? Square root greater than 0 matlab the term should also be greater than 0, or pi must be greater than greatest integer function of x, या फिर उल्टा greatest integer function of x must be less than pi. Yeah, any value less than pi, greatest integer function. मतलब x क्या हो सकता है? If this is 3.14, if this is 3.14, then the greatest integer function should be less than 3.14. मतलब greatest integer function should be less than equal to 3. Agreed? Greatest integer should be less than 3. x नहीं, x का greatest integer should be less than 3, less than equal to 3. मतलब क्या? आप 4 से लेके अगर आप 3 तक करोगे, from 3 to 4 any value is accepted, even less than that is accepted. So what will happen? 4 will be the maximum value, but it can't be accepted, which is minus infinity to 4. Got it? You have to think in the terms of greatest integer function and not just that variable. Okay? Greatest integer function should be less than equal to 3. Yes, this is the idea behind it. Okay, chalo, next question, try this. Let's see if you can answer this. We have to find the domain. यहाँ पे fraction में है, would be very useful for you. Try करो जल्दी से. Okay, this means minus infinity to 2 union 3 to infinity. 2 should not be included, but 3 can be. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है माइनस इंफिनिटी से लेके 2 इंक्लूडेड, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी 3 नॉट इंक्लूडेड. माइनस में है, क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस है, दैट्स व्हाई द साइंस विल ब्रैकेट्स विल चेंज. ओके, कृष्णा सेज बी, अदर्स? कृष्णा सेज द सॉल्यूशन फॉर दिस इज बी. एनीवन?
So what are they saying? They're saying 1 by modulus, greatest integer of x minus 2. Yes, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, what do we know? We know that the denominator x minus 2 का greatest integer has to be greater than 0. Equal to 0 नहीं हो सकता, has to be greater than 0, or it can be negative also, correct? Positive or negative, cannot be 0. That's the only deal. Do you agree with this? So यहां पे अपन क्या करेंगे? This is constant, इसको बाहर ले लेंगे. If I take this outside, yes, cannot be equal to 0. That means greatest integer function of x cannot be minus 2. Agreed? ये minus 2 नहीं हो सकता. Yes, so इसके allowed values क्या रहेंगे? मैं माइनस अभी नंबर लाइन डाल के बताते हैं. Yes, तो यहाँ पे -2 नहीं चाहिए हमें, राइट? इट कांट बी -2. दैट मीन्स -2 नहीं हो सकता. दैट टेक्निकली मीन्स व्हाट? नॉट -2, सॉरी, +2. +2 नॉट -2. सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैन नॉट बी +2, दैट मीन्स x का पॉसिबल वैल्यूज क्या नहीं हो सकता? 2 से लेके 3 के बीच में, 2 से लेके 3 के बीच में 2 को इंक्लूड करके इसको नहीं इंक्लूड करना, ये नहीं हो सकता. मतलब क्या हो सकता है? व्हाट वैल्यूज आर अलाउड? 3 इज अलाउड बट 2 तक नॉट अलाउड. गॉट इट? ये वाले जो वैल्यूज है जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूं वो नॉट अलाउड है. या तो अलाउड वैल्यूज क्या क्या रहेंगे? फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी से 2 तक 2 नॉट अलाउड, फिर 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक. क्लियर? विच इज व्हाट? ऑप्शन बी. नेगेटिव इंफिनिटी से 2 तक 2 नॉट अलाउड, फिर 3 से इंफिनिटी तक कुछ भी. क्योंकि अगर x का वैल्यू अपना कहीं पर भी बीच में हुआ, लेट्स से इफ x is 2.3, if x is 2.3, what would we end up getting? 1 by greatest integer function of 2.3 minus 2, which is what? 1 by greatest integer function of 0.3, which is what? 1 by 0, not defined. Make sense? Yes. तो A नहीं, C नहीं, B is the right answer. Got it? ऋषि D नहीं, B satisfy कर रहा है. B satisfies it. Okay? Last question of the day, then we will move. जल्दी करो ये वाला. Find the domain of this function. Square root of x square minus greatest integer of x square. Best way to do this would be using reverse engineering, but try करो. Quick. शुभम 3 बजे, 3 o'clock शुभम. YouTube पे 2 क्लासेस होती है, 12 बजे 3 बजे. आई स्टार्ट एट 3 o'clock. 12 बजे भी है, 3 बजे भी है. दिस इज आवर लास्ट क्लास ऑन एल्जेब्रा. कल से अपन मॉडर्न मैथ स्टार्ट करेंगे. दिस इज लास्ट क्लास ऑन एल्जेब्रा. कल से अपन मॉडर्न मैथ स्टार्ट करेंगे. शुभम तो कल से आप ज्वाइन कर सकते हो. फ्रॉम टुमारो न्यू एंट्री पॉइंट. ठीक है? कल अपन मॉडर्न मैथ स्टार्ट करेंगे. पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट थियरी एंड ऑल. कृष्णा सेज डी, नन ऑफ द अबव. अदर्स? तो फास्टेस्ट वे क्या है यहाँ पे? रिवर्स इंजीनियरिंग. यस. सो लुक एट दिस. दिस हैज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. दिस हैज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, नॉट इंक्लूडिंग 0. यहाँ पे 0 से इंफिनिटी है. यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स है.
यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बोथ बट नॉट जीरो, यहाँ पे एनीथिंग. तो टू स्टार्ट एलिमिनेटिंग आंसर चॉइसेस व्हाट कैन वी डू? टू स्टार्ट एलिमिनेटिंग आंसर चॉइसेस व्हाट कैन वी डू? एनीवन? स्टार्ट प्लगिंग इन, है ना, कोई ना कोई वैल्यू प्लग इन करके देखना है हमें, राइट? सो व्हाट विल वी डू? लेट्स से इफ x is 1, yes, if x is 1, what will happen? F of x will become square root of 1 square minus greatest integer of 1 square, which is what? Square root of 0, है ना. greatest integer of 1 क्या है? what is greatest integer of 1? greatest integer of 1 will be what? 1 only, so this is 0. yes, मतलब 1 allowed है, yeah, 1 is allowed. Let's try a negative value. Let us try a negative value, -1. So what will happen if I try a negative value? F of x will become square root of -1 the whole square minus -1 का greatest integer का square, which is again what? -1 square is 1. ये इसका भी -1 होगा. 1 minus 1, this is still 0, which is allowed. yes, तो नेगेटिव वैल्यूज अलाउड है, मतलब c को एलिमिनेट कर दूं, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज आर अलाउड. c को तो एलिमिनेट कर दिया. अभी 0 से ट्राई करो. 0 से क्या हो जाएगा? इफ x is equal to 0, what will happen? if x is equal to 0, what will we get? f of x will become 0 square minus 0 square, क्योंकि greatest integer less than equal to 0 is 0 only, which is 0, still allowed. so b can also be eliminated क्योंकि b 0 को निकालने की बात कर रहा है. now before we jump to a conclusion, yes, before we jump to a conclusion with what? with a, कि a ही सही है, before deciding that what would we have to do? we would have to try something, है ना. let us try non integer value. अब तक अपन ने इंटीजर्स लगाए, अभी नॉन इंटीजर वैल्यू ट्राई करेंगे, ठीक है. लेट्स ट्राई अ नॉन इंटीजर वैल्यू. लेट्स से x is 2.5, या x is what? 2.5. तो क्या हो गया? f of x will become square root of 2.5 square minus greatest integer of 2.5 square, जो कि क्या है? 2.5 square is 6.25 minus 2.5 का greatest integer क्या है? 2 square 4, तो square root of 2.25 allowed. yes, no harm. yeah, what if I put in a negative value now? if x is minus 2.5, yes, तो क्या हो जाएगा? f of x will be square root of minus 2.5 square minus greatest integer of minus 2.5 square, बराबर? agreed guys? yes. तो यहां पे क्या हो गया? minus 2.5 square is 6.25 minus what is the greatest integer less than equal to minus 2.5? जल्दी बता, इसका वैल्यू क्या होगा? क्विकली टेल मी गाइस. what is greatest integer of minus 2.5? guys, -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2.5 के लेफ्ट में जाना है, राइट में नहीं, लेफ्ट में. -3. वेरी गुड कृष्णा पारस. -3 है, मतलब ये क्या हो गया? दिस बिकम्स -3 द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लीविंग अस विथ व्हाट? 6.25 माइनस -3 स्क्वायर इज 9. this is what? minus 2.75 का स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर है तो क्या है? नॉट रियल. दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी अलाउड.
x equal to minus 2.5 cannot be allowed. So A is out of the equation. Got it? Everyone guys? Yes. तो इसका क्या मतलब हो गया? We can allow minus infinity to infinity, but only non-integer values. Yes, yeah, नहीं, integer values भी कर सकते हैं. So what will it be? It will be like this. Non-integer values in minus infinity to 0. Yes, union 0 से लेके infinity में कुछ भी चलेगा. इसमें any value will be okay, any real value will be okay, but इसमें सिर्फ integer values, only integer values. Okay, only integer values. नेगेटिव साइड में इंटीजर वैल्यूज अपन ने ट्राई किया, इट वर्कड. यस, नॉन इंटीजर वैल्यू में इट डिड नॉट वर्क. क्लियर? तो विद दिस entire functions is done, with this entire algebra is done. Tomorrow 3 p.m. we will be starting with modern math. Yes, we will be doing PNC, probability, set theory and so on. Tomorrow is the intro class for it. Okay, it's a new entry point. ठीक है? Thank you so much guys. Don't forget today 8 p.m. on the app we have profit and loss lecture 2. Yes, don't forget to use my code Surana Live for free access. Thank you so much guys. Have a great day. I'll see you today at 8 p.m. Until then, keep learning. Let's crack it.